Hello students, so today we will discuss our unit 3 because unit 3 was not complete in last video class. So, in this unit we will be discussing some more topics of this office tools. So we are going to start this. You know that we are discussing OpenOffice because this software we are using for this our classes, and this is also in our syllabus, but some tools that are not working in this OpenOffice I will demonstrate using Microsoft Word also. So closing a document, this topic was not discussed in last video class, and this is a topic into your books. So just I will demonstrate how you can close the documents. So here is the OpenOffice writer, and just we will open one document and I'll show you how you can close this. So this document is being opened. See, this document is opened here. Just have created a document. So the first topic is how to close a document. Just go on the file and choose the close option. So that file is closed, but this application is not closed till. So to close this application also we have another option. From this window we can also click on here, and also we can click on the file and then exit. So it will help you to exit from this application. Just we exited from this, and also we can click directly from here, from file and exit. Also it will do the same thing. Okay, and if you wanted to exit from this application, just you have to click on the file and then exit, and if you wanted to close that particular file, then click on the file and close. Okay, now exiting writer is also. Now word processing terminology, some terminologies are there which we will discuss. That first is margins. What is margin? Margin is the distance from the text, means distance of the text from the paper's edge. Just okay, before demonstration just see this left margin. So here distance of the text from paper's edge. Now there are some certain words, that is left margin, right margin, top margin and bottom margin. What is this? So left margin is the distance between the left edge and the text. Same way right margin is the distance between right edge and the text. Top margin also, and bottom means distance from the top edge and the text, distance from the bottom and the text. Some more things are there, that is gutter margin. Okay, gutter margin and mirror margin. So before this I will demonstrate what is left, what is right and what is that. See, this is a document, and the space from this top to here, this is known as the top margin. This is your left margin, this is your right margin, and this one is the bottom margin. And how we can change this? Just click on the format. Okay, go on the page, and here we have the option of this. See, left margin 0.5, right margin 0.1, top margin 0.79, bottom. Just I will change to demonstrate this. See, left margin is increased 1.5, right and top are not changed. Again go on the, and then click on the page. Okay, go here also, just change this also. Okay, see, we changed left and we increased right. So differences are very, very clear. Again go to the format and click on the pages, and also we can change this left and bottom, both are changed. So see, this is, we just decreased the bottom, we increased the left top margin. So this is the way, and it is very, very clear to see you that the text is being displaced inside the margin, that is known as your work area or print area. Okay, and after that one thing is that gutter margin. This is the extra space inside margin to ease up binding. It is used for the paper binding. Suppose whatever you wanted to print, whatever you are printing, whatever document you are printing, that must be binded. If you are taking 1 or 2 pages, then no issue. But if you have multiple pages, more than 50 pages, more than 10, so a stapler is not a good idea for that. So to keep them together, we used to go for the paper binding.
and when you will go for the binding there must be some extra spaces. Okay, so that is known as your gutter margin. मीन जब आप gutter margin देते हैं तो आप जो भी margin आपने define किया, whatever margin you have defined, उससे extra space मिलता. So demonstrate how. And in OpenOffice Writer there is no option that is how to add gutter. Just you can increase the margin inside left and inside means into left and right. But in MS Word this option is very clearly. So I will demonstrate this option using MS Word. Just see. We have a document here. Just go to the page layout, click on the margins. Okay, custom margins. Here we have option this gutter margin. So it is very clear that top margin is 1, bottom is 1, left is 1, right is 1. What we will do, we will define some extra space into the gutter, and gutter position is left. You have the option to define, means how you will bind. You will bind from the top or you will bind from the left, like brochures and invoices are binded from the top and books are binded from the left. So I will show you how we can increase this. Just see here it is 1. Now we are increasing 0.5. See, this is increased, but still margin is 1. This is the extra space added here. Now if you wish to add in top, just click on the top and see, this is, see, from here extra space is added because 0.5 will be used in the binding option. That will be bind. And we can increase and decrease margin from here also. Just remove extra margin. Means it is not necessary to remove gutter margin, but to demonstrate everything, just make it clear. Okay, we can increase margin from here also. Just see, go here and see the changes is reflecting here also. Okay, in the same way we can do on the Word and the OpenOffice Writer also. Go on to the page. Okay, here you have the margin options. Okay, make it also 5. Okay, 0.5. See, from here also we can increase. See, this we can do. And if you will go here, you will find that whatever changes you have done, that is increased. And see, this is left and right are not changed, but top is changed. But still here we have extra space. This is your gutter margin. The margin is not changed, but extra space is given here, and this is your gutter margin. Okay, so there is no direct option, but although we can do like this. So this extra space is known as the gutter margin. So there is no direct option, but we have the option. From this ruler boxes we can change. तो गटर मार्जिन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रूलर बॉक्स से जाके मार्जिन को डिक्रीज इंक्रीज करना है. तो जैसे इसको डिक्रीज करते हैं आपको एक्स्ट्रा गटर मार्जिन का स्पेस मिल जाएगा. दिस स्पेस इज नॉट काउंटेड इनटू द मार्जिन. दिस इज एक्स्ट्रा स्पेस एडेड टू द मार्जिन. मार्जिन और मार्जिन क्या, आपके पेपर के एज से टेक्स्ट स्टार्ट होने के जो डिस्टेंस है, दैट इज योर पेपर मार्जिन. So mirror margin, this option is inside your OpenOffice Writer. It is mirror margin means the same inside and outside of on a page. That is, the left and right margin on a page becomes right and left margin respectively on the next page. So for the paper you will bind. आप जब पेपर को बाइंड करोगे तो पेज नंबर 1, सपोज आपका जो पेज नंबर 1 है उसके साथ आप पेज नंबर 2 ऐड करोगे, तो जहाँ आपके पेज नंबर 1 का राइट सेक्शन में गटर मार्जिन होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट आपका पेज नंबर 2 के लेफ्ट में होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसका तो लेफ्ट एंड आपका बाइंड होगा ना. आप एग्जांपल के लिए 2-3 पेजेस ले लो, आप खुद देखो. आप तो पेज नंबर 1 आप लेफ्ट में आप उसको पकड़ोगे या फिर राइट में आप उसको प्रेस करोगे, स्टेपल करोगे. पेज नंबर 2 के आप क्या कर रहे हो, पेज नंबर 2 के तो राइट में हो रहा है ना, वो लेफ्ट में हो रहा है.
तो जब आप मिरर मार्जिन यूज़ करते हैं तो फर्स्ट पेज का जो लेफ्ट है वो सेकंड का राइट बन जाता है, और जो सेकंड का लेफ्ट है, जो सेकंड का फर्स्ट का जो राइट है वो सेकंड के लिए लेफ्ट बन जाता है. देखिए, आई विल शो यू हाउ वी कैन चेंज दिस. See, this is our document. Just we'll go on the format and pages. We will just, what we will do, we will increase 1.5 and here it will 1, just for the example. See, and now what is, every page is common, means the left of every page is equal and right of, so just we will go on the format, go on the pages, and this option is here, click on here mirrored and click on OK. See what happens. This is page number 1. Okay, just this is page number 1. Okay, and here this is page number 2. If it is not very clear to you, just go here and change the size. Now it is clearly visible. So whatever style we have applied on the first page, जो फर्स्ट पेज का लेफ्ट मार्जिन है वो आपके सेकंड पेज का राइट मार्जिन बन चुका है, और जो आपके फर्स्ट पेज का राइट मार्जिन था वो सेकंड पेज का लेफ्ट मार्जिन बन चुका. तो दिस इज मिरर मार्जिन. फर्स्ट पेज का जो मार्जिन होगा उसका जस्ट अपोजिट सेकंड होगा, सेकंड का जस्ट अपोजिट फर्स्ट थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड का जस्ट अपोजिट फोर्थ पे आएगा. ऐसे ही आपका सीक्वेंस चलेगा. यानी आप ये देख सकते हैं कि जितने ऑड पेजेस हैं, जो ऑड पेज नंबर्स हैं उनकी मार्जिन स्टाइल एक होगी, जो इवन पेज नंबर्स हैं उनकी मार्जिन स्टाइल एक होगी. सो इट इज़ वेरी क्लियर. सो मिरर मार्जिन इज क्लियर. नाउ वर्ड रैपिंग. Word wrapping means the placement of text going past the right margin to the next line is called word wrapping. See, I will demonstrate this word wrapping on a text document. See, this scroll bar is going beyond your window size, whatever your screen size is. So this text is not wrapped. So just go on the format and click on the word wrap. Now this horizontal scroll bar is disappeared and all the texts are bounded into the page width, whatever the page width. See this, still there is no scroll bars. So this is, यही आपके वर्ड रैपिंग का काम है कि आपके जो विंडो की साइज है, जो भी एप्लीकेशन विंडो की साइज है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन से कोई फर्क नहीं है. whatever the size you have clicked here, जितने भी टेक्स्ट हैं वो उसी साइज में एडजस्ट होकर आपको दिखाई देंगे. नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज हो जाएंगी, बट आपको स्क्रॉल नहीं करना होगा. मीन्स राइट स्क्रॉल नीड नॉट टू डू, जस्ट गो हियर. और अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो सी वी हैव टू स्क्रॉल इन फैक्ट द राइट ऑल्सो, लेफ्ट स्क्रॉल इज नॉट देयर. सो दिस ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली इनेबल्ड इन वर्ड्स, मीन्स MS Word or OpenOffice Writer. So you need not to change the settings. Now the next is indentation. What is indentation? So the distance between the text boundaries and the page margins. जो आपने पेज मार्जिन सेट किया उस मार्जिन के अलावा भी एक्स्ट्रा स्पेस आप जो छोड़ते हैं, इफ यू विश टू कीप एक्स्ट्रा स्पेस आफ्टर दैट मार्जिन ऑल्सो, दैट इज नोन एज द इंडेंटेशन. तो MS Office में ये आपको हैंगिंग एंड फर्स्ट लाइन के नाम से मिलता है, बट आपको OpenOffice राइटर में दिस इज पॉजिटिव इंडेंट, नेगेटिव इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट. So what is positive intent? Text is little inward from the margins. तो जो आपका पेज का जो मार्जिन है वहाँ से आप स्पेस छोड़ के आप मार्जिन के अंदर में जाएंगे. मतलब ये आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा नैरो होगा. whatever the text आप जो लिखोगे that will become narrower than the margin space. जो भी आपका मार्जिन स्पेस है उससे थोड़ा सा नैरो होगा. And what is negative intent? Negative intent में क्या होगा, whatever the text you have written that will go out of the marginal area. I will demonstrate. And hanging indent, the first line will go inside and the next line will start from the actual margin space. So I will demonstrate. Just wait. See, here we have the document. Just I will select the first paragraph, go on the format, and here click on the paragraphs, and here we have option indent. So before text is known as the left indentation and after text is known as the right indentation. Means whatever the changes you will do here, it will appear on the left margin and it will appear on the right margin. So just what I am doing, it just make it 0.5. Okay, and see what happens. From margin it is indented 0.5 more.
for the same paragraph, if you wish to define right indent also, just do this. See what happens. So this is your left indentation, means before text, and this is after text. Then what was hanging indent? Just go on the, you can do on the same paragraph also, just select it, go on the format, click on the paragraph and make it first line. So first line, see, जो आपने इंडेंट पहले से डिफाइन किया था कि लेफ्ट इंडेंट इतना होगा, उसके बाद आपने डिफाइन किया कि 0.5 हमको और चाहिए. सो 0.5 इज मोर प्रेस्ड ऑन द फर्स्ट लाइन. सो दिस इज योर हैंगिंग इंडेंटेशन. This is hanging indentation, left, right, all together. Now I will demonstrate you negative indentation. Just go on the paragraph, and what we will do, we will make it 0.5, but we will make it negative, minus 0.5. See what happens. जो आपका पेज मार्जिन है उसके 0.5 आउटर में ये टेक्स्ट आपका गया. आप चाहते हैं राइट मार्जिन भी डिफाइन करना, जस्ट सेलेक्ट दैट पैराग्राफ, गो ऑन पैराग्राफ. Okay, make it 0.3 and make it also 0.3, also make it negative. So you have to put negative sign for the negative indentation. See what happens. Okay, so this is positive and this is negative. So this is the positive indentation. यहाँ पे क्या है, आपका जो टेक्स्ट है वो आपके मार्जिन से भी नैरो होता चला जाता है, और जो नेगेटिव में है क्या है, मार्जिन से बाहर आपके टेक्स्ट को एक्सपेंडेशन मिलता है. You can expand the text outside the marginal area. So this is your indentation. Just click on the format, go to the paragraphs. Here before text means this is the left indentation, after text this is right indentation. First line means it is the hanging, whatever the line you will define. Okay, if you will define it minus, so it will become hanging. It will become hanging, and before that it was first line. जब आप इंडेंटेशन को माइनस में डिफाइन करोगे, इट विल बिकम हैंगिंग, मतलब फर्स्ट लाइन आपका होगा और बाकी यहाँ पे. अब फर्स्ट लाइन आपका क्या होगा, उस इंडेंट से बाहर आ जाएगा. और जब आप फर्स्ट लाइन करते हैं, जब आप पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, देन बिकम्स फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, एंड दिस इज हैंगिंग इंडेंटेशन. अभी क्या है, जो सारा पैराग्राफ है जैसे लग रहा है वो फर्स्ट लाइन से हैंग किया गया, मीन्स वो फर्स्ट लाइन से लटक रहा है. सो दिस इज योर हैंगिंग स्टाइल, एंड दिस इज हैंगिंग इंडेंटेशन. व्हेन यू डिफाइन नेगेटिव वैल्यू फॉर द इंडेंटेशन, इट बिकम्स hanging, and when you define the positive value, it becomes first line. So we learned first line, hanging, negative, positive. Okay. Now the left indent, right indent. Indent and margin both are not same. जैसा भी आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा, दे आर नॉट सेम. मार्जिन मीन्स आप जो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए डिफाइन कर देते हैं, और इंडेंट आप पर्टिकुलर उस पैराग्राफ के लिए, उस लाइन के लिए डिफाइन करते हैं. सो बोथ आर डिफरेंट. Now some text attributes. So normal text attribute is the normal, italics is the italics. We learned in the last video class कि हम कैसे italics बना सकते हैं with the help of control I, और या फिर आप I पे क्लिक कर सकते हैं, you can get the italics. Bold for control B. Control B is the shortcut to make text bold. Bold italics, control B and plus control I. मतलब आप या फिर italics पहले कर लें, control I अप्लाई कर दें, या फिर आप पहले bold कर लें फिर italics करें, doesn't matter. Sequence doesn't matter. Strike through. So I will demonstrate how we can make text strike through and how we can make double strike through. Superscript, subscript we learned in the last classes, small caps and all caps. So for all caps, आप caps lock on रखिए और type कीजिए whatever text you will type, that will become the all caps. But in case आपने नहीं type किया, but still we can make them all caps. We can make them all lower cases, all capital cases. So first of all, I will demonstrate that how we can make strike through, how we can make double strike through, and how we can make small caps. For small caps, I have written the menu. We have to click on the format, then we have to click on the characters, and inside that font effects. Just see, just selecting this line. Okay, go on the format, go on the character. And see here, this is a strike through, single strike through. See, this is single strike through. Next paragraph I am selecting, go on to the characters, and here double. So this is double strike through. I think this is very clear. Double line strike through and single line strike through. Okay, then what was the next? It was
small caps. Again go to the format, go to the character, and here we have option small caps. Effect we have small capitals. See what happened in small capitals. जितने भी लेटेस्ट टाइप किए गए सब कैपिटल में हो जाते हैं, जो आपने स्मॉल में लिखा है वो भी कैपिटल में बन जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, जिससे आपको फर्स्ट कैपिटल लेटर अलग दिखाई दे. बस ये डिफरेंस है आपका. आई थिंक ये क्लियरली विजिबल है आपको. ओके, अगेन गो टू द फॉर्मेट इन द कैरेक्टर and make it capitals. This is all caps. Again go to the format, go to the characters, okay, make it lowercase, all become lowercase. Go to the format, characters, go to the titles. So in titles, the first letter of every word is capital. जिसको आप MS Word में अगर आप यूज करेंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड ये ऑप्शन है. चेंज केस में आपको ऑप्शन मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड. सो ये दीज आर द ऑप्शंस. वी कैन यूज इट एज आवर रिक्वायरमेंट्स. जैसे हमें जरूरत हो वी कैन यूज इट. सो टेक्स्ट अलाइनमेंट वी लर्नड इन लास्ट वीडियो क्लास, बट आई फॉरगॉट टू explain vertical alignments. That's why this topic is included here again. So the text layout within a paragraph with respect to documents margin is known as the text alignment. आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स में देखा था. इट इज ऑफ टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स. तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमने क्या देखा था? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर्ड एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट. वो 4 अलाइनमेंट्स हमने देखे थे और वो क्या था? विथ रिस्पेक्ट टू द मार्जिन ही था. नाउ द वर्टिकल अलाइनमेंट इज व्हाट? वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन. ये भी आपके मार्जिन के ही रिस्पेक्ट पे होगा. दिस विल ऑल्सो बिकम मीन्स दिस इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन, बट हियर it is respected to the top and bottom, not from the left and right. And it is also of 4 types, that is top, bottom, middle and justified alignment. So in plain text you cannot do the vertical alignment, but whenever you will create table you can use it also. Hence आपको vertical alignment भी टेबल में मिलता है, क्योंकि आप क्या करते हैं टेबल में सेल क्रिएट होता है, रो एंड कॉलम में डेटा डिफाइन होता है, तो इनसाइड द सेल्स वी कैन यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स ऑल्सो. जस्ट आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ वी कैन डू दिस. See here we have a table and in this we can see. अब अगर देखिए तो फर्स्ट जो सेल है वहाँ पे क्या है? टॉप. जो आपके टेबल का जो मार्जिन है वहाँ के एकदम लेफ्ट में और टॉप से अटैच्ड है टेक्स्ट, दैट इज नोन एज द टॉप लेफ्ट. मतलब वर्टिकली के टॉप में है एंड हॉरिजॉन्टली क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट है. सेकंड सेल में अगर आप आए मीन्स कॉलम 2 सेल 1, कॉलम 2 सेल 1, यहाँ पे क्या आप देखते हैं? दिस इज टॉप मिडल. Means from vertically it is on top and from horizontally it is on middle and it is in centered alignment. So vertically top and horizontally on the centered alignment. In the last section it is vertically on top and horizontally on the right section. Middle में अगर आते हैं सेकेंड रो में आते हैं तो सेकेंड रो में this is vertically it is in centered and horizontally on the left. सेकेंड कॉलम में अगर आते हैं सेकेंड सेल में आते हैं सेकेंड रो के, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? horizontally and vertically both are it is in the centered. So the middle it's better to write it center. Third row means third cell of the second row, that is horizontally it is on right alignment and vertically it is in middle section. And the last third row, horizontally it is left, vertically it is bottom. Second cell, horizontally it is middle and vertically it is on bottom. And the third cell, horizontally it is on right alignment and vertically it is on the bottom. So this is the alignment. We can use it. And how we can change it? Just click on any cell and here though we have option. Just, this is for the center alignment, this is for the bottom alignment. See, it is written here: vertical center, vertical top, vertical bottom. So this option we have, we can change. We can right click also, and also we have this option here. This is cell and also we have option bottom. Okay, now we have page orientation. So the page orientation, it refers to whether the text is to be printed lengthwise or widthwise. अगर आप lengthwise print करते हैं, means if you go for the lengthwise printing, it is called as the portrait orientation, and if you go widthwise, it is called landscape page. Just see, by default
document is opened in the portrait mode, but we can change it to the landscape also. See, here we have the document. I just reduce the size so that we can clearly see. So just go on the format, click on the pages, and we have here option. By default this is portrait. Just click on the landscape and click on OK. Now see, the texts are changed. If it is not clear to you, then just see the page numbers, page number 5, and see the rulers. In horizontal it changed to the 10, and in vertical it changed to the 7 or 8. Just go on the format again, click on the page. See, just after clicking on this here portrait, see, now this horizontal ruler becomes the this vertical was, जो भी आपके वर्टिकल पे था वो आपका हॉरिजॉन्टल बन गया, और जो आपके हॉरिजॉन्टल में था वो आपके वर्टिकल पे चला गया. और यहाँ पे आप देखें पेज नंबर तो सेम ही है. नो, वी कैन चेंज द पेज नंबर आल्सो. What we can do, this is page number 4. Just go on the file, pages, make it landscape. See what happens. Now see, again it is page 5 pages, so the number of pages will change as you change the orientation. It is clearly visible. So the navigation, how we can navigate, you know, with the help of left arrow key you will move to the left, with the help of right arrow key you will move to the right. Means from the cursor to the right section, bottom down arrow will move you to the down, one line down, and up arrow will move you one line up. Home key will take you the beginning of the document, end key will end of the document, and control plus home will move the cursor to the beginning of the document. Home key will move you to the beginning of the same line, and end key will move you to the end of the same line. But when you press home key with control button, then it will move you to the beginning of the document, and control end will navigate you to the end of the document. And same key combinations can be used for the selection. Just we have to use the shift button with those arrow keys. Shift plus right arrow will one character into the right, it will select one character to the right. Shift plus left arrow will select one character to the left. Okay, this selection and navigation is also in class 4th video. You can watch that also. I will post the link of that video into the description of this video. You can go through there also. Okay, just I will demonstrate how you can move up, move down with the help of this. Control A is used for selection of all the documents. Control Shift up arrow, beginning of a paragraph. Here one thing is changed, that Control Shift and up arrow will take you to the beginning of a paragraph, and Control Shift down arrow will move you to the end of the paragraph. In OpenOffice it is changed. Just I will demonstrate. See, we are here, Control Shift up arrow key, so one paragraph is selected. Okay, Control Shift down arrow key, going one paragraph down. Okay, now what we can do, Shift left arrow key, just one character left. Shift right arrow key, one character right. Okay, Shift right arrow key, Shift down arrow key, one line down. Okay, Shift up arrow key, one line top. So this is the movement. And if you are here, if you will press end button, you will go to the end of this line. If you will press home button, it will move. See, I think it is not clearly visible. See.
see beginning, control home, not control home, just home button, and now the cursor is at the top. Now end key, the cursor is at the end. If you will press control plus home, it will go on the beginning of the document. Control plus end, it will go at the end of this document. So let's do it clearly. Control home at the beginning, control and at the end of this document. So this is very clear. You can do it. I need not to explain more. Now the change case in the writers, the uppercase I demonstrated you also, lowercase, sentence case, capitalize each word, and the toggle case. The capitalize each word is also known as the title case. Okay, sentence case, only the first letter of the first word is capitalized, rest is मेड इन द स्मॉल लेटर्स. सेंटेंस केस में क्या होता है, जो भी आपका फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल कर देते हैं, बाकी सारे कुछ स्मॉल होता है. जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ाई होगा, जी सिर्फ आप फर्स्ट वर्ड का ही फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, उसके बाद सब आपके स्मॉल में रहता है. ठीक है. टाइटल केस यानी कैपिटलाइज दिस वर्ड, अपर केस, लोअर केस. अभी एक होता है आपका टॉगल केस. टॉगल केस मतलब आप जिस केस में है जस्ट उसका अपोजिट, आपने जैसे भी लिखा है उसका जस्ट अपोजिट में आपको कर देंगे. दैट इज नोन एज द टॉगल. Just see how we can do it. See, here we have some text. Just I will select this first time. See, 2 आपका क्या है, सेंटेंस केस में है, ये पूरा एक सेंटेंस केस है. तो अभी आप जब इसको टॉगल केस में कन्वर्ट करेंगे तो जो 2 है, 2 का T कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, O स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा. चेंज सब स्मॉल में है, ये टोटल कैपिटल में हो जाएगा, बाकी सब टोटल कैपिटल हो जाएंगे. सिर्फ 2 का T स्मॉल होगा. जस्ट गो हियर, ओके, क्लिक हियर एंड जस्ट टॉगल दिस. See the differences, whatever I told you. If you write like here, welcome, okay, if you write like this, welcome, now select this, okay, and just go to this double case. See what happened. Welcome जब आपने लिखा था तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल था. No, it is changed. Just opposite. Whatever the style you have chosen, just opposite of that style. जो कैपिटल्स है वो स्मॉल, जो स्मॉल है वो कैपिटल्स. This is your toggle case. सो पेज फॉर्मेटिंग, जब भी पेज फॉर्मेटिंग की बात आती है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द पेज साइज, यू कैन चेंज द मार्जिन, यू कैन चेंज हेडर एंड फोटोज एंड मार्जिन हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नंबरिंग ऑफ द पेजेस, द पेज बॉर्डर एंड द सेटिंग एंड द पेपर साइज. जस्ट आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ वी कैन डू दिस. सी, दिस इज आवर डॉक्यूमेंट ऑफ 5 पेजेस. Go on the format, click on the pages. So here are the size of the page. It is in landscape mode and paper size is later. Just use it. Envelope size, okay. And now see what happens. This is the 5-page document. Now it will become 10-page document. And see, the paper size is also reduced. So this is the paper style you can choose. Go on the format, click on the pages, and here we have the option. Okay. So this is the way to change the paper size. And what was remaining? Page border and setting. So just go on the format, click on the page, and here we have the option of borders. Okay, just choose any style of the border. This is the style. Okay, and shadow style. These are the shadow styles. This is no shadow, and by default this will become all 4 borders. Okay, let me go. Okay, see, a border is created after the margin. जो आपका पेज का जो मार्जिन है वो यूज नहीं किया गया, मार्जिन के बाहर आपका पेज बॉर्डर आया. तो आप डिफाइन कर सकते हैं जिस भी तरीके का आपको बॉर्डर चाहिए. जो बॉर्डर्स यहाँ अवेलेबल है. ओके, वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर. सी हियर वी कैन चेंज द कलर.
Okay, so this is your page border style. और अगर आप शेडिंग भी देना चाहते हैं, if you wish to apply the shading style, go to the pages in here, just choose the shades. See here, an extra shade is used here. Go to the format, click on the pages. We used on the top side. If you use on the left side, see, it will appear on the left. Left is also there, top is also there, because we did not deselected that. Okay, and click on the no, and it will become. We can change the color of that also. Left siding. Okay, yellow color. See, this is the left siding. So this is the end of this video class, and in next video class we will be discussing unit 3, but the chapter may be changed. We will be discussing next chapter as per your book. Okay, thank you.